તો આ તરફ સીએમ હિમંતા બિસ્વા શર્માએ કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કર્યા। કોંગ્રેસ એક મહિલા વિરોધી પાર્ટી છે। કોંગ્રેસના કારણે યુસીસી લાગુ ન થયું। કોંગ્રેસના કારણે મહિલાઓને સમાન અધિકાર નથી મળ્યા તેવું નિવેદન આપ્યું। સાથે જ કહ્યું કે મહિલાઓએ કોંગ્રેસનો બોયકોટ કરવો જોઈએ। આપણા દેશમાં ઝેનઝી ન હોઈ શકે। આપણા દેશમાં દીકરા દીકરી હોય છે। ઝેનઝી એ અમેરિકા યુરોપનું કલ્ચર। આપણે એક સાથે મળી દીકરા દીકરીઓ માટે કામ કરવાનું છે। कि कांग्रेस को महिला लोग टोटल बॉयकॉट ही कर देना चाहिए। इसलिए आज जो हमारा देश का जितना भी समान कानून नहीं आ पाया है, इसका मूल कारण कांग्रेस ही है। कोई हमारा देश में कोई जैन अल्फा नहीं होते हैं। हमारा देश में बेटा बेटी होता है, पिता माता होता है, दादा दादी होता है, नाना नानी होता है। ये जैन अल्फा ये अमेरिका यूरोप से आते हैं और उस संस्कृति का साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं है। बेटा बेटी का कल्याण के लिए काम करना ही हमारा धर्म है। लेकिन हमारा बेटा बेटी को कहीं कोई जैन अल्फा ये सब बांटना ठीक नहीं है। एक साथ रहना है, परिवार जैसा रहना है, बेटा बेटी के लिए खूब काम करना है। आसामना